Hello everyone. So today we'll be talking about learnings and values. So today is our second lecture. So learning and values of Carl Rogers में हम ये बात करेंगे कि again I picked it up from selected works. Rogers ने कुछ before we move on to the 19 propositions या the six necessary and sufficient conditions. I thought कि maybe it's better कि in order to understand the softer side of Rogers, in order to understand his persona, let's look at his learnings and values. I considered that it would be important to look at his values that he carries as a person. So he proposed 14 learnings and values that we would be looking in today. So, to start with, the first learning and value that he proposes. So, he says, in my relationships with persons, I have found that it does not help in the long run to act as though I was something that I am not. सो यहाँ पे रॉजर्स जो बात कर रहा है वो बेसिकली प्राइमरीली फसाड और डिफेंसेस की बात कर रहा है वो ये कहता है कि इट वुड नॉट हेल्प इफ आई एम एंग्री बट येट आई वुड वांट टू एक्ट एज काम और if I am unsure about a certain thing and I act as if I am confident. I don't like something but I act as if I like something. So यहाँ पे वो एक प्राइमरी प्रोपोजिशन ये रख रहे हैं अपनी लर्निंग्स और वैल्यूज़ के अंदर कि अगर मैं अपने रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाऊँ, अगर मैं अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाऊँ मज़ीद, तो लॉन्ग रन में इट वुड रियली हेल्प मी इफ़ आई कैन बी हु आई एम एज अ पर्सन। तो इसीलिए हम फर्स्ट और सेकंड को दोनों को मिला के हम क्लब टुगेदर करके हम देखते हैं, क्योंकि सेकंड वैल्यू में वो ये कहता है आई फाइंड आई एम मोर इफेक्टिव व्हेन आई कैन लिसन एक्सेप्टेंटली टू माई सेल्फ एंड कैन बी माई सेल्फ। सो इन दोनों को अगर हम इकट्ठे करके देखें तो मैं आपको सबसे पहले तो एग्जांपल दूंगा जॉर्ज ओरवेल की स्टोरी है शूटिंग एन एलिफेंट। और उसके अंदर जॉर्ज ओरवेल जो है वो एक कैरेक्टर बनाता है जो कि पुलिसमैन है और बर्मा के अंदर है। सो बर्मीज पुलिस के अंदर वो और ये इंग्लिश कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से के ज़माने की स्टोरी की सेटिंग है। सो एक एलिफेंट जो है वो खुल जाता है और ही द एलिफेंट इज़ ऑन द लूज। और वो जो है जो आवाम है वो बड़ी पैनिक कर जाती है। वो बाज़ार के अंदर से गुजरते हुए तबाही फैलते हुए जा रहा होता है एंड पीपल आर टेरिफाइड। सो द पीपल एक्सपेक्ट दिस मेन कैरेक्टर हु इज़ द पुलिसमैन टू शूट दैट एलिफेंट। अब वो ये कहता है कि वो पूरे उसमें एक डायलेमा दिखाता है कि ही डज नॉट एक्चुअली वांट टू शूट द एलिफेंट बट ही हैज़ टू बिकॉज ही हैज़ टू एक्ट लाइक अ साहिब, क्योंकि वो उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और वो एक्सपेक्टेशन उस इंडिविजुअल शख्स से नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन आम आवाम की उस यूनिफॉर्म से है। सो उसमें वो लिखता है कि वो जो मेन कैरेक्टर है वो पहले तो थोड़ा अवॉइड कर रहा होता है और अपने अंदर की डायलॉग्स और कॉन्वर्सेशंस उस स्टोरी में आ रहे होते हैं कि he doesn't want to shoot the elephant, he tries to avoid it, लेकिन as a policeman he has to avoid it. So उसमें बीच में फिर वो एक बंदे को भी कुचल देता है वो एलिफेंट और वो लोगों के अंदर टेरर और बढ़ जाता है और वो और एक्सपेक्ट करते हैं एंड अल्टीमेटली दैट पर्सन टेक्स एन एम एट द एलिफेंट और फिर ही हैज़ टू शूट दैट एलिफेंट और वो मार भी देता है। लेकिन जब वो शुरू में उसको कर रहा होता है उस प्रोसेस से इनर डायलॉग से गुजर रहा होता है तो वो यूनिफॉर्म की जो बात करता है उसमें वो कहता है साहिब हैज़ गॉट टू एक्ट लाइक अ साहिब, ही हैज़ गॉट टू अपीयर रेजोल्यूट एंड टू नो ऑफ हिज ओन माइंड। सो उस वहाँ पे वो ये शो कर रहा है कि एक साहिब के तौर पे, एक पुलिसमैन के तौर पे आई हैव टू एक्ट अ सर्टेन वे। सो यहाँ पे हम रॉजर्स की वो बात करते हैं कि जहाँ पे हम उसका आइडियल सेल्फ की जो थ्योरी है जो जिसको वो द सेल्फ स्ट्रक्चर के तौर पे लेके आता है। सो रॉजर्स ये कहता है कि मैं आइडियल सेल्फ जो है उसके तौर मैं मेरा एक पर्सोना होगा जो कि एक्चुअली मेरा एक रियल पर्सोना होगा। सो व्हेन आई कम इनटू दिस वर्ल्ड एज अ चाइल्ड तो मेरी एक इननेट डिज़ायर है, नीड है कि टू बी वैलिडेटेड एंड एक्सेप्टेड एंड
my validation and acceptance is primarily I seek it from my parents. So अगर हम ऑब्जेक्ट रिलेशंस के स्कूल ऑफ थॉट को देखें, मेलेनी क्लाइन, विनीकॉट वगैरह को, तो इट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज the mother. So I would seek validation and acceptance primarily from my mother, and then secondary my father would come in. और अगर हम ट्रांजैक्शन एनालिसिस के अंदर एरिक बर्न जैसे स्कूल ऑफ थॉट्स को देखें तो वो ये कहते हैं कि नहीं, द फादर एंड द मदर collectively are important since day one. So the child would seek validation and acceptance from both of them initially. In any case, I would seek validation and acceptance from my parents. लेकिन होता क्या है कि मेरी जो ट्रू नेचर है, जो मेरा ट्रू सेल्फ है या मेरा जो रियल सेल्फ है, जो रॉजर्स यहाँ पे टर्म देता है द ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ, जिसको हम मज़ीद जब हम प्रोपोजिशंस में जाएंगे 19 प्रोपोजिशंस में, तो फिर उनको हम ज़्यादा डिटेल के अंदर देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या है और सेल्फ कैसे फॉर्म होता है और सेल्फ कैसे रेगुलेट करता है या इंटरफेयर करता है और इंटरप्ले होता है ऑर्गेनिज्म और सेल्फ के दरमियान, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे. लेकिन so as a child I seek validation from my parents and all the significant others in my life that are later to come in my life. So what happens is कि I realize कि I will not get that validation and acceptance according to how I am or what my true nature is or what my real self is. So that means if I do not get that according to what my real self is, then I would have to form a self that would get that validation and acceptance. So मैं अपनी जो ट्रू नेचर है, जो मेरा रियल सेल्फ है, मैं उससे दूर होता चला जाता हूँ और मैं एक ऐसा सेल्फ फॉर्म करना शुरू कर देता हूँ जिसकी बुनियाद पे मुझे वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस मिलेगी पेरेंट से और फिर सोसाइटी से. सो होता क्या है कि जितना इस ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ, जिसे रॉजर्स जो है वो ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ कहता है और आसान जबान में हम उसे रियल सेल्फ कह सकते हैं या ट्रू सेल्फ कह सकते हैं, विनीकॉट की ज़बान में ट्रू सेल्फ भी बोला जाता है, या फिर तो जितना ये ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ और उसके ऑपोजिट में द सेल्फ स्ट्रक्चर है जिसे आइडियल सेल्फ बोला जाता है या द फॉल्स सेल्फ बोला जाता है, जितना इन दो फॉल्स सेल्फ विनीकॉट की ज़बान में जितना गैप बढ़ता चला जाएगा, उतना ही न्यूरोटिक एलिमेंट मेरी पर्सोना में डेवलप होता चला जाएगा. सो बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टेड विद माई रियल सेल्फ, सो वो न्यूरोसिस का एलिमेंट जो है वो मेरी शख्सियत के अंदर दाखिल हो जाएगा. और इसी को रॉजर्स एक्सप्लेन करता है अपनी बेसिक वैल्यूज़ के अंदर कि इफ़ आई कैन एक्सेप्ट माई सेल्फ, थरली एक्सेप्ट हु आई एम, इसी की बुनियाद पे मेरे रिलेशनशिप्स भी रियल होना शुरू हो जाएंगे. अदरवाइज व्हाट आई वुड बी डूइंग इज आई वुड हैव अ फसाड, आई वुड हैव अ पर्सोना. तो जैसे युंग के साइकिक मॉडल के अंदर पर्सोना उसने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है. सो यहाँ पे वो जो वहाँ पे पर्सोना का देता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू एक्ट इंटरैक्ट विद द सोसाइटी. तो यहाँ पे रॉजर्स का जो वो मॉडल है, वो जो रोल प्ले कर रहा है वो सेल्फ, वो रोल प्ले कर रहा है, द सेल्फ स्ट्रक्चर इज प्लेइंग एग्जैक्टली दैट रोल. सो फॉर मी टू इंटरैक्ट विद द सोसाइटी, अ सर्टेन काइंड ऑफ एन आइडियल सेल्फ, द सेल्फ स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड. और उसके अंदर जो है होता क्या है कि व्हेन आई स्टार्ट identifying, over identifying with myself, that is where the true problem starts happening. So ये जो एक इंटरप्ले है बिटवीन द सेल्फ या द ऑर्गेनिज्म का, इसको आप बिल्कुल, इसकी मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ और लेट्स से कि इस लेक्चर में आने से पहले मेरी अपनी लेट से बेगम के साथ एक लड़ाई हुई है. अब उस लड़ाई की वजह से मेरे अंदर, मेरी बॉडी के अंदर आई फील एंगर, आई एम गोइंग थ्रू अ सर्टन थिंग. सो रॉजर्स ये कहता है कि मेरा जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक अपनी सेंसिंग है, यानी ऑर्गेनिज्म, माय टोटल ऑर्गेनिज्मिक सेंसिंग के एज अ पर्सन which includes both the unconscious and the conscious. Lekin what is happening is the self, the ideal self or the self structure is sitting at the gateway of the conscious. So it is not much aware of what is happening in the unconscious. But the organism is, when Roger refers to organism, so that is the total organismic sensing, which includes the unconscious experiences and the conscious experiences. So according to Rogers, सेल्फ जो है वो और ऑर्गेनिज्म जो है उनका एक इंटरप्ले होता है.
और अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरी वो लड़ाई हुई है अपनी बेगम से, तो माई बॉडी इज गोइंग थ्रू, लेट्स से, द फीलिंग ऑफ एंगर, और मेरी बॉडी के अंदर एक हल्की सी ट्रेमर्स भी आ रहे हैं, एक अग्रेशन भी आ रहा है। लेकिन अब जैसे ही मैं क्लास में आया और इस कैमरे के सामने आया, तो मेरा एक पर्सोना है जिसको मुझे कैरी करना है, यानी कि मुझे अपने स्टूडेंट्स के सामने एक्ट करना है एज काम। सो और बिल्कुल भी ये एंगर जो है मैं इस रूम के अंदर इस कैमरे के सामने नहीं लेके आ सकता। तो फर्स्ट ईयर पे एज ए टीचर आई हैव टू एक्ट एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। और सेकंड ईयर पे मे बी एज अ मेल मेरी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि आई कैन नॉट इजीली ब्रिंग इट आउट इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। सो what I do is now, my while teaching, my organism, my total organismic sensing, in my total organismic sensing, my organism is going through the feeling of anger. तो यानी वो जो sensation है, वो जो maybe there's blood rush in my ears, tightness here, around my jawline, and I'm feeling my heartbeat, it's increasing, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन मुझे एक्ट करना है एज अ टीचर। और अभी इस वक्त जो मैं आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूँ अपने सेल्फ के अंदर, दैट हैज़ एन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द इमेज ऑफ द टीचर। सो इस परस्यूट में what my body is going through, the feeling of anger, I don't recognize it. It is not in my conscious awareness. तो अभी आपको पढ़ाते हुए मेरा ध्यान ज़्यादा ये है कि मैंने क्या बोलना है, क्या कहना है, किस चीज़ के साथ क्या क्या एग्जांपल्स देनी है, लेकिन मेरी बॉडी उस एंगर से गुजर रही है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट राइट नाउ, but the point is, my body is going through that anger. I am not consciously aware of it. That does not mean that my body is not going through it. So, ये जो मेरी body गुजर रही है and I am not aware of it, is the organism that is going through it. My organism that is going through it. But what is not allowing this organismic feeling to get into my self structure, my ideal self, uh, into my conscious awareness, is because of my self structure or my ideal self. So Rogers ये कहता है कि the more I develop that capacity to connect with my organismic feelings, to connect with my organism, my true sensing, the lesser the interference of the self is, the more better or the more normal I can function as a person. Otherwise, अगर मेरा सेल्फ, यानी जैसे वो जॉर्ज ऑरवेल का वो जो पुलिसमैन है शूटिंग एन एलिफेंट में, वो आखिर में ये कहता भी है कि समटाइम्स आई वंडर कि मैंने जो मारा उस एलिफेंट को, कभी लोगों को ये समझ आएगी कि मैंने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उस टाइम पे आई हैड टू शूट द एलिफेंट बिकॉज दैट वाज द वेरी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी एज अ पुलिसमैन. So I had to do it, but that was something that as a person he would never want to do, but he had to do it as a policeman. So and that is the facade of the policeman, of how he has to act. So इसमें रॉजर्स ये कहता है कि जब मेरा और अगर मैं अपने आप को सेकंड वैल्यू के अंदर, वो ये कहता है कि if I can accept myself as I am, that is when I would start changing. So इसको वो नाम देता है the curious paradox का, कि है तो ये paradox है, if I accept myself as I am, then how can I change? लेकिन this is the very place where Roger mentions के so I can only change once initially I accept myself as I am as a person. But I cannot accept myself as I am as a person if I have a very strong self structure that I over identify with. तो जैसे उस पुलिस वाले के साथ हुआ, या जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी कि एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं आई कैन नॉट शो माई फीलिंग्स, और अगर मेरी आया मैं उसके साथ आइडेंटिफाई करता हूँ तो माई ऑर्गेनिज्म इज गोइंग थ्रू इट, but I would not want to show it as a person here. So Rogers ये कहता है कि if I can accept myself for who I am, that is when the change would occur. So जैसे कि अगर एक शख्स जो है, मैं अगर गुस्से में हूँ और दूसरा बंदा मुझे ये कहता है कि यार तुम्हें तुम्हें गुस्सा आया हुआ है, और मैं कहता हूँ नहीं मुझे तो गुस्सा नहीं आया, आई एम परफेक्टली फाइन,
Now I am actually in the state of anger, and the other person is identifying that I am in the state of anger, but I am not willing to accept it. So if I'm not willing to accept it, how would I change my state? I would never be able to change. So that is what Roger says, कि it is a paradox and it is a curious paradox, but that is how change occurs. And in the first step, when I can accept myself for who I am, only that is when I can accept other people for who they are. So, and that is when I can develop real relationship. Otherwise, if I am basing my relationships on my ideal self, the self that I present to the society, then all the relationships that I develop would actually be also dependent on the self that I present to the society. It would not be my real self. It would not be based upon my real self, on my organismic self. And that means I would not have real relationships with the people around me. So it is very important to connect with my real self. That is what Rogers talks about in the first two propositions. Then in the third proposition वो ये कहता है कि I have found it of enormous value when I can permit myself to understand another person. So what is important is कि यहाँ पे the word that we have to focus on is permit myself. So यहाँ पे रॉजर्स ये कहता है कि मैं इनिशियली जब किसी शख्स को परमिशन का ये मतलब है कि जजमेंट कम्स इन एंड इवैल्यूएशन कम्स इन, तो मैं जैसे ही किसी शख्स को देखता हूँ और वो कोई बात कर रहा होता है तो मैं कहता हूँ ओ नो दैट्स बैड और दैट्स नॉट पॉसिबल और दैट्स एबनॉर्मल, इस तरह की जजमेंट्स पास कर रहा होता हूँ. या व्हेन आई सी अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक आई मीन इट ऑफन हैपेंस, जैसे व्हेन आई एम टीचिंग एंड I often have this self-awareness about myself when the first time I see a person, I have this very feeling कि what am I judging that person about? So I need to be aware of it and I have to let go of that judgment of that person. And this is how slowly in that process I let go of all the judgments and the evaluations and I stop judging a person and evaluating a person on how they look or how they talk or what their views are, all of these things. जैसे इससे थोड़ा कदरे उल्टा है जो ट्रांजैक्शन एनालिसिस में एरिक बर्न करता था. तो एरिक बर्न जब साइकेट्रिस्ट था और आर्मी के अंदर था, सो उसकी जो पोजीशन थी वो ऐसी पोजीशन थी कि वो कोई डिस्चार्ज से रिलेटेड जो सोल्जर्स हैं उनसे कोई एग्जिट इंटरव्यूज टाइप या थेरेपी सेशंस करता था. और उसमें क्योंकि वो बज़ाहिरन तो बड़ा एक बोरिंग काम था, तो बर्न जो है उसने ये सोचा, उसने इंट्यूशन के ऊपर काम करना शुरू किया. व्हेन अ पर्सन वुड एंटर इन, I would I would try to sense my own intuition. What does my intuition tell about the other person? कि वो अगर आया है तो उसकी अपनी बीवी के साथ क्या रिलेशनशिप्स होंगे, या वो किस कंडीशन से आया, उसका हो सकता है फैमिली कंडीशन. मैं अपनी इंट्यूटिव सेंस से वो तमाम चीज़ों का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूँगा. तो एरिक बर्न ऐसे काम किया करता था और उसने इंट्यूटिव सेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया. लेकिन रॉजर्स जब यहाँ पे बात करता है तो रॉजर्स ये कहता है कि वो जो इमीडिएट जजमेंट और इवैल्यूएशन सडनली मेरे अंदर आती है, दैट आई हैव टू लेट गो ऑफ. क्योंकि ये याद रखिएगा कि रॉजर्स की जो टेक्निक है वो नॉन डायरेक्टिव टेक्निक है. इट इज़ नॉट अ डायरेक्शनल अप्रोच. इट इज़ नॉट कि एज अ थेरेपिस्ट आई एम द एक्सपर्ट, द मेडिकल मॉडल टिपिकल, एंड आई विल टेल यू व्हाट इज हैपनिंग विद यू और एनालाइज एंड देन guide you through. बल्कि it is कि I cannot direct the client. The client themselves, the person themselves would come up with what they're feeling and where they have to go towards and how they would expand in their evolution. So Rogers यही कहता है कि I have to permit myself to understand the other person, and that is the very first step towards empathy. If I do not permit myself, I would never be able to empathize with the other person's perspective or the other person's phenomenological world or experience what they're going through. So यहाँ पे जैसे उस एरा में फिनोमिनोलॉजी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी के अंदर आना शुरू हुई, और जैसे पर्स है उसने भी फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को इनकॉर्पोरेट किया अपनी थ्योरी के अंदर. रॉजर्स ने भी किया, दोनों ने मुख्तलिफ तरीके से किया, लेकिन रॉजर्स प्राइमरली पर्सपेक्टिविज्म को लेके आया कि किसी भी दूसरे शख्स का पर्सपेक्टिव क्या है और उनकी रियलिटी को अंडरस्टैंड, उनका जो सब्जेक्टिव फिनोमिनन है, उनका जो
their way of experiencing something. How do they go through one unit of experience? How do they consume it? How do they assimilate it? How do they uh, act upon it? All of these I have to understand as the therapist कि where are they coming from and what is their subjective background from where they're coming. So वैल्यू नंबर थ्री में वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि आई हैव टू परमिट माई सेल्फ टू नॉट evaluate and judge the other person, to understand the other person. I have to give that permission to myself. और ज़ाहिरी बात है कि ये एक कंसिस्टेंट एवोल्यूशन है, ये एक प्रोसेस है जिसमें से मैं गुजरूंगा आहिस्ता 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 व्हेन आई बिकम इवॉल्व एज अ पर्सन. जैसे रॉजर्स ने वो किताब भी लिखी ऑन बिकमिंग अ पर्सन, सो ही ऑलवेज बिलीव्ड इन, जो लास्ट वैल्यू है, इट्स अ फ्लूइड प्रोसेस एंड इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. सो यू विल ऑलवेज बी इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग and you will never become because it's never ending. It's a journey, it's not a destination. So value 4 के अंदर वो कहता है, I have found it enriching to open channels whereby others can communicate their feelings, their private perceptual worlds to me. So वही जो उनका private perceptual world है, और मैं जो अभी phenomenology की बात कर रहा था, so the other people, they I I can only connect with them when I open my channels with them, and that is only possible by two to three very basic things. That is confidentiality. So, when as a therapist they bring in their perspective, not just as a therapist, even as a person, when you develop that capacity to be very, very confidential about the process that the other person is bringing in with you, the information or whatever they're sharing with you, it has to be completely confidential. They have to have this confidence that this person will not share my information, my process, my feelings, or the happenings in my life with anyone else, the ones that I am sharing with this person. Second is judgment. Okay, there has to be no judgment at all. You have to provide a non-judgmental space. That is के अगर एक एथियस्ट आया है और फॉर एग्जांपल एक रिलीजियस एंटी रिलीजियस व्यू लेके, या एक एक्सट्रीमली रिलीजियस पर्सन आया है आपकी उधर, या एक एलजीबीटी क्यू वाली उसमें से कोई आपके पास आए, यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल, यू हैव टू एक्सेप्ट एवरी वन हु कम्स इन, and that is very very important as a therapist. And not just as a therapist, it is also very important as a person, individually as well. I need to provide that sensitive safe space to the other person so that they can open up and they can connect back to that very first value that he talks about, that is the real self, the organismic self. They do not have difficulty in being themselves within the session. That is very very important. So अगर आप एक एक typical interventionist strategy से आएंगे, let's say you act like a parent or you pass a judgment like a typical societal character कि ये नहीं नहीं ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है, या an atheist comes to you and you say कि आओ मैं तुम्हें दीन की तरफ लेके जाता हूँ, या an extremely religious person comes in and you say कि आओ मैं तुम्हें दीन से दूर लेके जाता हूँ, वहाँ solution है. Both of these approaches are wrong. And that is why it is important that I, as a therapist, have to be in a very balanced, in the nothing of the zero center. जैसे Friedlander कहता था, you have to remain, you have to stay in the nothing of the zero center, and that is when you will have a balanced perspective about life and the other person. If I am caught by the opposing forces, I will be lopsided. I will be trapped because I'll have polarized opinions, and one way or the other, I will lead into a judgmental position and a non-sensitive position. So it is very important uh, to have this confidentiality, non-judgmental element within the therapy space, and also this element of sensitivity. My sensitivity towards the other person. I recognize you. I see you. What you're going through. फिफ्थ में वो कहता है आई कैन ट्रस्ट माई एक्सपीरियंस. अब यहाँ पे वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कहता है, वो कहता है कि total organismic sensing of a situation is more trustworthy than intellect. So Rogers जो है वो he believes in hunches. वो ये कहता है कि it is very, so total organismic sensing is much more than intellect. जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप अपने इंटेलेक्ट से डिस्क्राइब करें कि खुदा क्या है या कौन है या कैसा है, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट.
as a person, and for all the believers. But it takes more than the intellect to comprehend what God is, and that is the total organismic sensing. That is the intuitive sensing. Okay, in totality, how do I sense my environment, एंड हाउ डू आई सो अगर हम खुदा की बात करते हैं, इसमें अता तुराब की का बड़ा खूबसूरत शेर है। अगर हम ऑर्गेनिज्मिक सेंसिंग की बात करेंगे, अता तुराब का शेर है कि दरअसल खुदा वो बुत काफिर है कि जिसको हर एक ने अंदाजा इदराक तराशा। और सो इज put it beautifully कि अंदाजा इदराक तराशा, it is more than intellect, it is more than even perception, it is that integration of the left brain and the right brain and the third space, that is of that gut intuitive sensing. So that leads towards that मेटाफिजिकल एलिमेंट, जिसके बारे में इकबाल ने कहा कि दिले बिना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। सो वो जो एक एक्स्ट्रा सेंसिंग है एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल योर सेंसेस, दैट कम्स अंडर टोटल ऑर्गेनिज्मिक सेंसिंग। मैं जैसे अभी एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था जो फ्लैश फ्लड्स और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुल्क में अभी कंडीशन है, अ, उसमें मैं एक वीडियो देख रहा था कि देयर इज अ डॉग एंड द डॉग इज स्टेयरिंग एट अ हिल, नथिंग इज हैपनिंग, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वो हिल की तरफ लगातार देख रहा है और आधा मिनट 1 मिनट वो हिल की तरफ देखी जा रहा है। और उससे पहले वो चल के जा रहा होता है, लेकिन सडनली वो खड़ा हो जाता है और वो हिल की तरफ देखना शुरू हो जाता है। एंड देन आफ्टर 1 मिनट वो लैंड स्लाइडिंग होती है। या आप जैसे अक्सर देखते हैं कि अगर अर्थक्वेक आने वाला हो तो कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। दी This is the organismic sensing that birds have, that all types of animals have, dogs have, and we as human beings also have. But the problem is, again, because we are so much far away from our organismic self, the effect that it has on us is we lose touch to our organismic sensing, and then we're no longer able to understand what our organismic sensing is telling us or where it is leading us towards. सो जैसे इसके बारे में रॉजर्स ने कहा कि मैक्स वेबर को उसने कोट किया और उसने कहा कि इन कैरिंग ऑन माई ओन हम्बल क्रिएटिव एफर्ट आई डिपेंड ग्रेटली अपॉन दैट विच आई डू नॉट येट नो एंड अपॉन दैट विच आई हैव नॉट येट डन। सो वो जो एक पोइटिक एक्सप्रेशन है, यानी जिसे मुनीर नियाजी कहता था कि एक मालूम की दुनिया से ना मालूम की दुनिया में जाना, वही शायर का बुनियादी काम है। वो सो स्टीव जॉब्स ने इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। स्टीव जॉब्स ने एक अपने मैं उसका एक खिताब सुन रहा था, कॉन्वोकेशन में उसकी एक स्पीच सुन रहा था, उसमें वो कहता है कि मैं अर्ली ईयर्स में जब मैं ड्रॉप आउट हुआ अपनी यूनिवर्सिटी से, तो माय रीज़न फॉर ड्रॉपिंग आउट वाज कि आई डिडंट वांट टू पे फॉर द कोर्सेज जो मैं नहीं लेना चाह रहा था, एंड आई वांटेड टू स्पेंड माय रिसोर्सेज इनटू द कोर्सेज दैट आई वांटेड टू टेक। तो वो कहता है इसी तरह मैं एक कैलीग्राफी के कोर्स में चला गया और उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्यों ले रहा हूँ। और तो ही वाज टॉकिंग अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स लेटर इन लाइफ। सो उसने कहा कि मेरी बस मुझे एक इंट्यूटिव सेंस थी, मेरा गट मुझे कह रहा था कि मैं ये क्लास लूँ। और जब उसने वो कोर्स लिया तो later down in his life when he was developing that user interface of Apple, और जब वो fonts वगैरह और aesthetics पे काम कर रहा था, तो कहता है तब मुझे वो कैलीग्राफी वाली क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा काम आई। सो you have to listen to that inner calling, inner sensing, gut sensing, organismic sensing, Rogerian उसमें और total organismic sensing है। बाकी आप जो भी उसको बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, लेकिन रॉजर्स के यहाँ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस जो है उसका वो बहुत माना रखते हैं और उसके ऊपर फोकस जो है वो काफ़ी ज़्यादा करता है। अच्छा, सिक्स्थ वैल्यू में वो कहता है कि आई हैव फाउंड इट हाईली रिवॉर्डिंग व्हेन आई कैन एक्सेप्ट अनदर पर्सन। सो वो ये कहता है ये कि एवरी पर्सन इज एन आइलैंड अनटू देमसेल्व्स, और वो ये कहता है कि ये जो कल्चर है of where I project my thinking and feeling onto the other person. Every other person must think and feel and believe the way I do. ये जो है, uh, this actually damages a lot the other person a lot. और वो ये कहता है कि it is highly rewarding if I can just simply accept the other person for who they are, and for that it is critical that I do not have
a projection of the perfect image of that person. जैसे वो अपने relationship में कहता है, and I've also faced this in my relationship and I've understood this in my relationship कि रॉजर्स ने ये बात की और जब मैंने उसका पढ़ा तो I understood it about my relationship कि I also projected a perfect image of my life partner, of my wife, how she should be. Now, she has her own intelligences, I have my own intelligences, but when she would never match my intelligences, I used to feel, okay, why does she not match my intelligences? But later on, after reading Rogers, it was a blind spot for me, and I understood that I need to respect her intelligences and accept her for who she is as a person. And when I stopped projecting my perfect image of my life partner onto her, that is when the real change started happening. And then she also stopped doing it with me. And we ultimately found a space, found a relationship, found that space in our relationship where both of us could be who we are as a person. And that is what Rogers is referring to, not just in relationships with therapy or like I mean with friends or not just between a husband and a wife. So or even between a father and a son or जैसे मैं फ्यूचर में लेक्चर डेवलप करूँगा and I plan to develop a whole lecture on Freud's very important work that I consider to be very important, that is Totem and Taboo, जिसमें उसने इंसेस्ट और द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द फादर एंड सन की के बारे में बात की हुई है. सो व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि वहाँ पे भी उसने ये बात की हुई है इज that metaphorical death of the father that I will talk about in the future, because that metaphorical death between the father and the son actually allows the son to be who they are as a person, and then ultimately depends on the modality of how the metaphorical death of the father is created, but also allows the father to be who they are as a person. So, proposition value number 7 जो है, so 6 वैल्यू नंबर 6 तक जो है वो इंटर रिलेशनशिप्स की बात कर रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की, लेकिन वैल्यू नंबर 7 से ऑनवर्ड्स अप अंटिल 14 ही टॉक्स अबाउट द इंट्रा प्रोसेस, द इंट्रापर्सन प्रोसेस. सो वो कि एक अपने साथ इंसान का क्या प्रोसेस चल रहा है. सो सेवंथ में वो कहता है द मोर आई एम ओपन टू द रियलिटीज इन मी and in the other person, the less do I find myself wishing to rush in to fix things. Now, this is something really beautiful that he says, and the focus should be on the realities in me and the realities in the other person. I need to accept them both. And then the third point is where I would stop, I would not rush into fixing things for the other person. Because that is our basic instinct as a human being. I rush to fix things for the other person. So again, यहाँ पे भी वही element आ जाता है कि I drop my expectations of how I want the other person to be. But उससे भी पहले there's this one very beautiful observation that I've had recently in my therapeutic practice in the past 2 years. And day by day, I see it more and more. I observe it more and more. And to be honest, it is also painful, uh, but it is also very relieving as well. It's paradoxical, but yeah, it is. So what happens is, I've recently I've started noticing that one of the most difficult things as a therapist is uh, that when I see my client going towards a pit or a hazard, और मैं देख रहा हूँ कि वो जा रहा है और वो एक्ट करने से उसको नुकसान होगा, लेकिन वो फिर भी जा रहा है. But as a therapist, I cannot jump in. Why do not I jump in? Why do not I rush in to fix things? Because I cannot rob the other person of that experience. And this is that very godly manner of this profession that comes, that godly element of this profession came. But we are human beings, हम खाम हैं, हम वैसा नहीं कर सकते. It's difficult, but we have to go through that process where, as a therapist, I let the other person go through that experience, knowing that it will damage them or they will fall into that pit, but I let them go through it. और फिर मैं I just have to be with them in that process as a support and for them as a help to process what has happened to them and how they ultimately went into it. ये वही बात है कि जैसे युंग ने बोला कि
If your conscious is unaware of your unconscious, it will direct your life and you will call it fate. Because at the end of the day, I'm a firm believer of what Jung has said, and every other theorist in psychotherapy says that it is your unconscious that is directing your life. And this is what Jung is indicating कि वो direct तो कर रहा है आपकी life को, लेकिन आपको ये लगता है कि it is not directing your life and you feel like it is something external to you. So that is that element of external locus of control that comes in, and you feel like I have no control over things and this is fate that is doing things to me. ये तकदीर में था तो मेरे साथ हुआ. And but that is actually not the case, because most of the things that are happening to us are actually coming out of our unconscious. So it is ये मेरा लाशऊर है जिसमें से वो चीज़ें निकल के मेरे ही environment में मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या क्रिएट कर रहा हूँ. सो रॉजर्स यहाँ पे ये कहता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आई 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 हैव टू स्टॉप रशिंग इन टू fix things for and I have to focus on allowing that experience to come in. So value number 8 में वो कहता है experience is for me the highest authority. So एक्सपीरियंस इज फॉर मी द हाईएस्ट अथॉरिटी का मतलब ये है, वो ये कहता है कि यहाँ पे एक बड़ा प्यारी चीज़ लिखता है. वो कहता है कि नीदर द बाइबल नॉर द प्रॉफिट्स, नीदर फ्रॉइड नॉर रिसर्च, नीदर द रेवलेशंस ऑफ गॉड नॉर मैन कैन टेक प्रेसिडेंस ओवर माई ओन डायरेक्ट एक्सपीरियंस. सो यहाँ रॉजर्स ये कहता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कंसिडर एक्सपीरियंस एज द हाईएस्ट अथॉरिटी. वाई? बिकॉज my experience is something that I can understand best as compared to any other person. So मेरे पर्सपेक्टिव से मैं जैसे उस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ और जैसे जैसे मैं उस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि मैं उस एक्सपीरियंस को ओन करूँ और उस एक्सपीरियंस को ओन करने के बाद ही मैं उसको एसिमिलेट करूँगा और देखूंगा कि हाउ हैव आई गॉन थ्रू इट, व्हाट हैव आई डन व्हाइल गोइंग थ्रू इट, and what has happened to me after going through it. So and why इसके अंदर रॉजर्स ये कहता है कि इट इज़ इवन मोर क्रिटिकल कि उस एक्सपीरियंस को मैं आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइज करूं, जो कि वो आगे जाके प्रोपोजिशन वैल्यू नंबर 10 के अंदर कहता है कि आई एंजॉय द डिस्कवरिंग ऑफ ऑर्डर इन एक्सपीरियंस. सो वो उस एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करना, असिमुलेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन जब मैं एक तजर्बे से गुजरता हूँ, एक एक्सपीरियंस से गुजरता हूँ, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको असिमुलेट करने के बाद उसके अंदर अमेंडमेंट्स कर सकता हूँ कि अच्छा मेरा पहले ऐसा तजुर्बा हुआ था और ऐसा रिजल्ट आया था, अब मैंने ऐसा किया तो ऐसा रिजल्ट आया. सो आई कैन कंसिस्टेंटली इवॉल्व थ्रू माई एक्सपीरियंस and can look at myself how am I evolving through that experience while going through it. अच्छा और ओनरशिप ऑफ एक्सपीरियंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वैसे भी अगर आप देखते हैं तो जैसे रॉजर्स की हम आगे भी बात करेंगे, तो हम जब स्टेजेस ऑफ प्रोसेस की बात करेंगे तो स्टेज 1 में जब इंसान दाखिल होता है और फिर स्टेज नंबर 7 तक जब इंसान पहुंचता है, तो वो बेसिकली इट इज़ अ जर्नी ऑफ वेयर अ पर्सन कम्स इन एट स्टेज 1 हैज़ एन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, जो जूलियन बी रॉटर का कॉन्सेप्ट था ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल, और अल्टीमेटली गोज ऑन टू develop an internal locus of control. So this journey of an external locus of control into an internal locus of control is very very critical. Why? Because what is an external locus of control? An external locus of control is when I believe my actions and my behaviors do not result in certain consequences or events in my life. यानी मैं जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करूँ मेरा उसके ऊपर इख्तियार नहीं है, एक्सटर्नल इवेंट्स हैं जो मेरी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहे हैं. An internal locus of control is where I believe my actions and my behaviors result in certain consequences or events in my life. यानी मेरे जो behaviors हैं वो मेरा एक इख्तियार है उन इवेंट्स के ऊपर मेरी ज़िंदगी में जो हो रहे हैं. So when you develop this process and you start understanding, again referring to what Jung said, if your conscious is unaware of your unconscious, that is what he was talking about. You ultimately need to develop this orientation I have some amount of control over my life, and my actions and my behaviors are certainly contributing to my environment or the consequences or the events in my life. So और यहाँ पे सबसे जो मेरे लिए मैं कोट करूँगा कि हमारे लिए एज अ मुस्लिम, अगर आप इसको मिथोलॉजी के तौर पे लेते हैं या आप
एज एज रिलीजन उस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। सो हज़रत यूनुस की जो स्टोरी है, द बेली ऑफ द वेल सिचुएशन, कि जब हज़रत यूनुस मछली के पेट में फंसे, उस वेल की पेट में फंसे, तो उस उन्होंने क्या सबसे ज़्यादा दोहराया, जो कि आयत करीमा बन गई, कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि बेशक के अल्लाह तू एक है, और बेशक के हमने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया। सो व्हाट इज हजरत यूनुस डूइंग, कि वो अपने ऊपर ओनस लेके आ रहे हैं कि अगर मैं इस मछली के पेट में फंसा हूं, तो जरूर मैंने ही कुछ ऐसा किया है कि मैं इस मछली के पेट में फंसा हूं। सो और इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है। एंड व्हेन हजरत यूनुस रिपीटेडली उन्होंने रिसाइट की ये आयत, तो तभी वो बेली ऑफ द वेल की सिचुएशन से बाहर आए, उस मछली के पेट से बाहर आए। एंड दिस इज ऑल्सो, आई आई रेड इट इन द गुलागार के पहले को, जिधर अलेक्जेंडर सोल्जनित्सन ने भी एक चैप्टर इसमें लिखा कि हाउ डिड ही, व्हाट डिड ही डू टू एंड अप इन द गुलाग्स, वो जो प्रिजन है उसके अंदर कहते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर, इफ यू एवर गेट द अपॉर्चुनिटी गो एंड रीड इट, कि कैसे उसकी जो अर्ली उसमें जो उसकी पैट्रियटिज्म थी या नेशनलिज्म थी, जो उसको लेके गई वो जर्मनी में वॉर करना या उसका वापस आना, और वो जितना सारा प्रोसेस था, उसमें उसकी अपनी क्या कंट्रीब्यूशन है, कि एंडेड अप इन दैट जेल ऑफ स्टालिन, क्रिएटेड बाय स्टालिन। सो वैल्यू नंबर 9 में रॉजर्स बात करता है, वैल्यूएशन बाय अदर्स इज नॉट अ गाइड फॉर मी। अब यहाँ पे वो ये कहता है कि अगर मैं दूसरों की वैल्यूएशंस को सुनता और उसके मुताबिक आता, तो फिर तो मैं कभी अपनी थ्योरी ना डेवलप कर पाता, क्योंकि उस टाइम पे जब वो अपनी थ्योरी डेवलप कर रहा था, तो वो साइकोलॉजी के अंदर से, जहाँ पे जैसे हमने पहले भी कॉन्टेक्स्ट की बात की थी, बिहेवियरिज्म चल रहा था, स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस आ रहा था, और ज़्यादातर लोग जो है उसी उलझाव में लगे हुए थे। इसने अपनी अलग से एक काउंसलिंग की दुनिया निकाली, और इसने अपनी प्रोपोजिशंस बनाई और थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट बनाया। और वो ये कहता है कि अगर मैं अपनी इंस्टिंक्ट को, अपनी ऑर्गेनिज्मिक सेंसिंग को मत फॉलो करता, और मैं दूसरों की जो एवेल्यूएशंस हैं उनको फॉलो करता और अपने तजर्बे को मत फॉलो करता, तो मैं कभी भी अपना ये स्कूल ऑफ थॉट ना डेवलप कर पाता। सो दैट इज व्हाट ही इज रेफरिंग टू। वैल्यू नंबर 9 में, आई एंजॉय द डिस्कवरिंग ऑफ ऑर्डर इन एक्सपीरियंस। जैसे मैंने पहले बात की आपको, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात की थी, कि उसके अंदर एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दोनों की इंटीग्रेशन का एक उसने उसने बात की थी। सो रॉजर्स के यहाँ लॉफुलनेस और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बड़ी अहमियत थी, जो कि उसने बचपन में ही, जैसे हमने उसकी कंडीशनिंग की बात की, एग्रीकल्चर जब वो फार्म पे था और कैसे साइंटिफिक एग्रीकल्चर पढ़ता था, वहाँ से उसकी ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की हिस्स पैदा हुई थी। सो वो ये कहता है कि एज अ थेरेपिस्ट ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं ऑर्डर ऑफ एक्सपीरियंस को एस्टैब्लिश करूं, और साथ ही अगली वैल्यू में वो ये कहता है, मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा। वैल्यू नंबर 11 में वो कहता है, द फैक्ट्स आर फ्रेंडली। सो द फैक्ट्स आर फ्रेंडली के अंदर वो ये कहता है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो उस वक्त थोड़ा सा उस एरा में थोड़ा सा नाला भी था, क्योंकि वो ये कहता था कि जितने भी थेरेपिस्ट आते हैं, साइकोथेरेपिस्ट या काउंसलर्स, वो अपनी थेरेपी सेशंस को रिकॉर्ड नहीं होने देते या रिसर्च नहीं होने देते उनके ऊपर, जिसकी वजह से देर इज़ लैक ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन दिस फील्ड ऑफ साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग। सो उसके यहाँ ये बहुत ज़्यादा अहमियत थी इस चीज़ की, कि हम जनरलाइजेशन से बचें। और वो ये कहता था कि मेरा जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, मैं जिसमें से गुजरता हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस के अंदर मेरी लर्निंग है, उसको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उसके साथ ऑब्जेक्टिव फैक्ट फाइंडिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इनकॉर्पोरेट करूं, ताकि मैं कंसिस्टेंटली अपने आप को अपडेट करता रहूं। सो एज अ थेरेपिस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये देखता हूँ एज अ थेरेपिस्ट के एक शख्स जो है वो लेट्स से एक फादर अबैंडनमेंट है, और एक मेल चाइल्ड के अंदर फादर अबैंडनमेंट है, उसके अंदर कैसे आती है। और साथ ही हो सकता है मेरा एक और क्लाइंट आता है जिसमें जो फीमेल है और उसकी भी फादर अबैंडनमेंट है, और मैं ये देखता हूँ उसकी प्रेजेंटेशन कैसे है। और फिर मैं आई फाइंड अनदर फीमेल
हु इज़ अबैंडन्ड बाय द फादर और रिजेक्टेड बाय द फादर, और उसके अंदर मैं प्रेजेंटेशन देखता हूँ, उन दोनों फीमेल्स को कंपेयर करता हूँ। हो सकता है दो, एक फीमेल और एक मेल का सिमिलर हो और एक फीमेल का दूसरी फीमेल से ना सिमिलर हो। सो थ्रू माय एक्सपीरियंस एंड ऑब्जेक्टिव फैक्ट फाइंडिंग आई अंडरस्टैंड कि ओके, सो नाउ दिस इज डिफरेंट। नाउ आई वाज थिंकिंग कि फीमेल की जो फादर अबैंडनमेंट है उनकी प्रेजेंटेशन सेम होगी, लेकिन यहाँ तो दो फीमेल्स का क्लैश आ रहा है और एक मेल और फीमेल की जो फादर अबैंडनमेंट है वो सेम आ रही है। सो this is how I develop on my research, I develop on my scientific investigation and integrating my experience through that process. So that is very important for him. So वो ये कहता है कि facts are not the enemies, investigation is not the enemy. So it is important as a therapist कि you develop that capacity to incorporate this scientific investigation investigative process. सो वैल्यू नंबर 12 में वो ये कहता है व्हाट इज मोस्ट पर्सनल इज मोस्ट जनरल। तो वो जैसे पोइट्स की भी बात करता है कि वो ये कहता है कि जैसे पोइट्स जो हैं, क्यों लोग पोइट्स के साथ या आर्टिस्ट के साथ इतना रिलेट करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ एक इंतहाई पर्सनल एक्सप्रेशन है, वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो जो उसको, लेकिन कहीं ना कहीं आउट देयर विद मेनी डिफरेंट पीपल दैट पोएटिक एक्सप्रेशन रेजोनेट्स। इट इज़ दैट वेरी सिमिलरिटी, ऑल्टर ट्विनशिप, ऑल्टर ट्विन ईगो वाला जो कॉन्सेप्ट है कि अच्छा सिर्फ मैं इसमें से नहीं गुजरा, ये तो ये शख्स भी गुजरा है। तो जब आप शायरी पढ़ते हो और आप, तो दैट इज़ व्हाट क्लिक्स टू यू कि अच्छा यार ये इसने तो ऐसे एक्सप्रेस कर दिया है, और आप कहते हो वाह वाह वाह, क्या बात कर दी है इस बंदे ने। सो दैट इज़ where you where it ticks for you, your experience and that poet's experience is exactly the most similar। लेकिन अगर आप उस पोएट से पूछोगे तो उसके क्रिएटिव एक्सप्रेशन में जब वो उसमें से गुजर रहा है तो वो एक इंतहाई पर्सनल प्रोसेस को बयान कर रहा है, और उस इंतहाई पर्सनल प्रोसेस को वो जो बयान कर रहा है और जब वो सबके सामने लेके आता है तो पता ये लगता है कि ये तो कई सारे लोग इस प्रोसेस में से गुजरे हैं। सो दैट विच इज़ मोस्ट पर्सनल इज एक्चुअली दैट विच इज़ मोस्ट जनरल। और ये चीज़ उसको रियलाइज हुई जब वो, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, डॉक्टर हैमिल्टन का एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें उसमें वो एज अ सब्जेक्ट आया था, और उस एक्सपेरिमेंट में उससे इंतहाई पर्सनल सेक्सुअल नेचर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और वो बड़ा अनकंफर्टेबल था। लेकिन बाहर जब वो आया तो ही रियलाइज्ड कि ये तो जो जो कुछ पूछा और जो, तो देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ हाउ अदर पीपल गो थ्रू सिमिलर एक्सपीरियंसेस, एंड आई यूज्ड टू थिंक दिस इज समथिंग दैट आई गो थ्रू, बट इट इज वेरी कॉमन आउट देयर दैट पीपल गो थ्रू इट। सो यहाँ पे वो ये बात करता है कि वो पोइटिक एक्सप्रेशन और वो जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, they dare to express their uniqueness, but that uniqueness is actually something that everyone else is going through and they resonate with. So it is not particularly the uniqueness of that, of the subject of that experience, but yes, the journey is individualistic in nature. Every person goes through their own journey, and the nature of that journey is different. But at the end of the day, the content, the theme is what everyone relates to. And ultimately when we would go into Jung's lectures, जब हम उसकी theory में जाएंगे, तो when we would study archetypes, that is also more or less what we are talking about, those common similar archaic themes that have been going on throughout in this universe with us as mankind we've been experiencing through। बहुत पुराना, आज से 4000 5000 साल पुराने के जो तजर्बात हैं वो आज भी प्रॉपर थीम्स में, कॉमन थीम्स में हमारे आगे आते हैं। सो 13 वैल्यू में वो कहता है कि वैल्यू नंबर 13 में, इट हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस दैट पर्सन्स हैव अ बेसिकली पॉजिटिव डायरेक्शन। सो यहाँ पे वो एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी की बात करता है। और अगेन जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि वो बैग ऑफ पोटैटोज जो है, वो एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी को उसने फर्स्ट टाइम जब स्टडी किया था कि उन बैग ऑफ पोटैटोज में से रूट्स निकल के जाना शुरू हो गई उस रोशनदान में से जहाँ पे वो रोशनी गिरी थी उसकी तरफ। सो वो ये कहता है कि every basic living organism has an actualizing tendency, that basic tendency to grow outwards, to grow positively। So वो ये कहता है कि every person has that capacity to, or say even with the most cruel people or even with the most antisocial people, it is still there। सो उनके हालात मुवाफिक नहीं होंगे उनके लिए कि वो एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी ग्रो कर सके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्योंकि उनके हालात ऐसे रहे कि वो उसमें से ग्रो नहीं कर सके।
सो वो एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी ग्रो नहीं कर सकी, लेकिन वो वहाँ एग्जिस्ट करती है, सप्रेस्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. इट इज़ देयर in a stagnant form. It is stagnant. It is not active, but it is there. It is present. So रॉजर्स की कुल जो लॉफुलनेस, जो वो लॉ ऑफ थेरेपी बनाना चाह रहा था, वो जो एक वो अपनी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेशन की जो मैं बात कर रहा था, तो उसने आगे जाके जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में उसकी सफिशेंट एंड नेसेसरी 6 सफिशेंट एंड नेसेसरी कंडीशंस पढ़ेंगे, तो वो उसने अपनी तरफ से बेसिकली लॉ बनाना चाहा है कि अगर ये 6 कदम, ये 6 कंडीशंस पूरी होंगी, तो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी चेंज आएगा ही आएगा. हो सकता है कि पर्सन ए में कम आए, हो सकता है पर्सन बी में बहुत ज़्यादा आए, लेकिन कुछ हद तक कंस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी चेंज आएगा ही आएगा. सो उसने एक लॉ फॉर्म करने की कोशिश की, और उस लॉ में उसने ये कहा कि वो जो कंडीशंस हैं, एज अ थेरेपिस्ट माय ओनली मेजर वर्क इज कि मैं वो कंडीशंस प्रोवाइड करूं क्लाइंट को, तो ऑटोमेटिकली वो एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी को मौका मिलेगा और वो ग्रो करना शुरू कर जाएगा वो शख्स अपनी नेचर में. और वैल्यू नंबर 14 में वो कहता है, लाइफ एट इट्स बेस्ट इज अ फ्लोइंग चेंजिंग प्रोसेस इन विच नथिंग इज फिक्स्ड. सो जैसे उसकी किताब भी है कि ऑन बिकमिंग अ पर्सन, सो रॉजर्स ये कहता है कि यू विल ऑलवेज बी इन द प्रोसेस ऑफ on becoming a person. You will always be in a process of becoming a person. So there is no fixed destination. It is a journey, and you will always be in the process of evolution, in the process of becoming. So there is no state that is particularly to be achieved and where rest would be achieved. It is an ongoing process for the rest of your life. So वो उसमें लिखता है, it is the process from rigidity to fluidity. सो जब आपके यहाँ फ्लोइंगनेस आ जाएगी, फ्लूइडिटी आ जाएगी, दैट इज व्हेन यू वुड एक्सेप्ट द वेरी रियलिटी ऑफ लाइफ. इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ फ्लोइंगनेस एंड मूविंग टूवर्ड्स दैट फ्लूइडिटी. सो और वो आगे जाके जब हम उसके 7 स्टेजेस ऑफ प्रोसेस पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे स्टेज 1 में एक शख्स जब आता है, तो वो शख्स जो है इंतहाई रिजिड होता है और रिजिडिटी एग्जिस्ट कर रही होती है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो स्टेजेस से गुजरता चला जाता है और स्टेज 6 और 7 की तरफ जाता है, तो वो रिजिडिटी से फ्लूइडिटी, फ्लोइंगनेस की तरफ आ जाता है. फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है एज अ पर्सन, एंड एज अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग रियलिटी ऑफ माई सेल्फ एंड ऑफ द अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी. सो ये उसकी कुल 14 वैल्यूज एंड लर्निंग्स थी. इनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि दिस टेल्स अस अ लॉट अबाउट हाउ रॉजर्स इज एज अ पर्सन, एंड नॉट जस्ट दैट. आज हमने कुछ बहुत बेसिक लेवल पे उसकी जो 19 प्रोपोजिशंस है, उसकी जो सफिशेंट कंडीशंस हैं, उनकी भी बेसिस हमने डाल दी है. हम इसी के ऊपर हम उसकी बुनियाद हमने डाल दी है. इसी के ऊपर हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे इन वैल्यूज़ की बेसिस पे वो अपनी 19 प्रोपोजिशंस बनाता है और अपनी 6 सफिशेंट कंडीशंस बनाता है, नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशंस. तो थैंक यू.